Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official, welcome back to another helpful video. I'm providing you the important long questions from whole book. From unit number 1, discuss the base and derived quantities and their units and make the table. जैसे कि आपकी बुक के ऊपर है, आप उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Significant figures आपके पास important long question है. From unit number 2, motion and its types, डिफाइन वेक्टर्स, इक्वेशंस जितनी आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और हमेशा बोर्ड में यही रिपीट होती हैं. मॉर्निंग टाइम में अगर सेकंड आ गई है तो इवनिंग टाइम में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी आ जाती है. फ्रॉम यूनिट नंबर 3 वी हैव इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम. डिफाइन फ्रिक्शन. Law of conservation of momentum is another important long question for you. Centripetal force is another long question. From unit number 4 we have very important long questions. What is the resultant of the forces? Discuss the head to tail rule. Another long is what is the resolution of the forces? How a force can be determined with the help of its perpendicular components. These are very important long questions और उनके आपने मैथमेटिकल जो है वो बहुत एक्यूरेट राइट करने हैं. फ्रॉम यूनिट नंबर 5 टॉर्क भी आपके पास एक चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इक्विलिब्रियम और उसकी स्टेट्स भी. फ्रॉम यूनिट नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं. फ्रॉम यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी वी हैव इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स फार्मूला. व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन, राइट इट्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट टू रिड्यूस. From part C, from chapter number 7, we have important long question. What are the kinetic molecular model of matter? State the Pascal law and explain the hydraulic press. State the Archimedes principle. State the Hooke's law. Young's modulus is another important long question. हर एक वो चैप्टर जिसके आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने उसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है. फ्रॉम यूनिट नंबर 8 evaporation and its factors, volumetric thermal expansion and linear thermal expansion are very important long questions for you. From unit number 9 we have important long question like thermal conductivity and you have to drive its formula. Explain the greenhouse effect is another important long question. So students, I hope you find this video helpful. Don't forget to subscribe NPS Official, like, share and comment also.